So now we move towards a new concept, that is power. So what is power? Power is defined as a rate of doing work. सेकंड डेफिनेशन हम इसकी कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. जैसे कि हमने वर्क में कहा था, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. फर्स्ट फॉर्मूला से हम इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू W ओवर T. इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क. सेकंड में हम कहते हैं कि पावर इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी दो वेक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो स्केलर है. So it is scalar just like work. The SI unit of power is watt, जो कि हम नॉर्मल फिजिकल कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं. But the British unit of power it is horse power, यानी जो UK और उसके adjoining एरियाज के अंदर जो यूनिट यूज होता है, जो कमर्शियल यूनिट है, that is horse power. 1 horsepower equals 746 watts. So there are two types of powers. First is the average power. इसका फॉर्मूला हम कहते हैं कि P average equals to delta W over delta T. सेकंड इज इंस्टेंटेनियस पावर, यानी जैसा कि हमने वेलोसिटीज वगैरह का देखा था कि इंस्टेंटेनियस मींस एट एनी इंस्टेंट जबकि टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. सो यही फॉर्मूला जब टाइम इंटरवल जीरो तक अप्रोच कर जाए तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, यानी उस डेफिनेट इंस्टेंट के ऊपर कितनी पावर थी. Now we have a problem that a 50 kg man goes up 5 stairs each 10 centimeter high in 25 seconds. Find his power. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 0.5 watts, 1 watt, 10 watts and 20 watts. So the correct option is option C, 10 watts. इसका देखते हैं. Power equals to mgh over t, यानी mgh that was the work done over time taken. So इन सब का जो प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग के बाद जो आंसर आता है that is 10 watts. This is the power of that man. यहाँ पे 50 जो था that was the mass of man, g is the gravitational acceleration, height is the collective height of all the stairs. 5 stairs थी, हर एक 10 सेंटीमीटर की हाइट पे, यानी 0.1 meters. So the answer is 10 watt. After power we discuss energy. So energy is defined as a capacity to do work. Energy, just like work and power, it was scalar. SI unit of energy, it is joule. We'll later on see that energy and work are interconvertible, यानी work जो है that can be converted into energy, and similarly energy is used to do work. So इनका unit भी same है, that is joule. Other other units include kilowatt hours, electron volts and ergs. Kilowatt hour जो है that is also the commercial unit of electricity. Electron volts, it is the unit of a small charge particle. It is a smaller unit. और ergs जो है that is the non-SI unit or the CGS unit of energy. The mechanical energy is due to motion, and mechanical energy is of two types, kinetic and potential energy. So this is all about this slide. In the next slide we'll discuss in detail these two forms of mechanical energy. Thank you.